Pramod Sawant is briefing over the nightclub fiasco, the tragedy that claimed the lives of 25 people. Let's listen into what he's saying. नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सकाळी 6 पयलीं म्हाका फोन केलो. पुराय इन्सिडंटाची त्यांनी चौकशी केली आणि हांवेनूय तांकां सगळें ब्रीफ केलें. ताज्या उपरांत रोखडेंच तांच्यांनी ह्या संदर्भात जे डेथ जाला तांच्या घरच्याक 2-2 लाख रुपया जाहीर केले. जे इंजर्ड जाल्ले आहा तांकां 50,000 रुपया तांच्यांनी जाहीर केल्या. हाच्या इन्सिडंटाच्या उपरांत आमी सरकारा कडल्यान आमच्या डिजास्टर हातूंतल्यान 5 लाख रुपया तांच्या फॅमिलीक दिवपाचें थारायलां. जेंकां मेजर इंजरीज आसा तांकां 50,000 रुपया आमच्या सरकारा कडल्यान मेळटले. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे परत जावचे न्ही. बट जाल्ल्या इन्सिडंट्साची सुद्दां मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी करपा खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ हाज्या सकयल ही कमिटी बसयल्या. तातूंतल्यान SP साउथ, डेप्युटी कलेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी, डायरेक्टर फॉरेन्सिक्स हाजी कमिटी बसयल्या आणि त्या कमिटीच्या अंतर्गत तांच्यांनी एका विकाच्या भितर हो रिपोर्ट जो आसा विदीन 1 वीक तांणी सबमीट करचो पडटलो. नेक्स्ट आमी DGPक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की ह्या हातूंतल्यान आमी म्हणटा की कोण कोण कल्प्रीट आशिल्ले ह्या सगळ्या गजालींनी परमिशन्स दिल्या पासून ते ऑर्गनायज करी पर्यंत ते क्लब ओनर आसतलो किंवा ऑर्गनायझर्स आसतले किंवा तांकां जेणे जेणे परमिशन्स दिल्ली आसा त्या सगळ्या जाणांक जी एक्शन्स म्हणजे सगळी सेक्शन्स विशेष करून सेक्शन 125 आणि सेक्शन 287 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत तांकां बूक करतले. ॲट प्रेझेंट 4 लोकांक अरेस्ट केल्या. तांचो जनरल मॅनेजर आणि तांचे आनी 3 जाण लोक. बाकीच्यां कडेन इन्क्वायरी सुरू आसा. त्या क्लबाचे जे ओनर्स आसा ह्या दोगांय खातीर अरेस्ट वॉरंट काडला. अरेस्ट वॉरंट आनी ताका अरेस्ट करपा खातीर आमची टीम ही दिल्ली हांगासर गेल्या. आमी जशें म्हणटा की इन फ्युचर गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत तो आय ओपनर ठरता. म्हणून सरकारान स्ट्रिक्टली सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाच्या अंतर्गत एक ऑडिट करपाचें थारायलां. ऑडिट ऑफ सच क्लब्स आनी बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट. सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हो त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसतलो. ताच्या अंतर्गत वन फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट, वन फ्रॉम द सेफ्टी पर्पज PWD बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट आणि वन फ्रॉम द अवर फायनान्स डिपार्टमेंट. हे सगळें व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हणजे पुराय ऑडिट हे केलें वयतलें आणि ऑडिट केल्या उपरांत ताच्या खातीर SOP फ्रेम जातली आणि ही SOP जी आसा ही त्या अनुसार सगळ्या जाणांक चलोवचें पडटलें. गव्हर्मेंट विल इश्यू द एडवायजरी. अशा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाच्या अंतर्गत एडवायजरी इश्यू करतले आणि त्या एडवायजरीच्या अनुसार सेफ्टी प्रोविजन्स ही सगळ्या खातीर घेतले. आमी हे सगळें करता आसतना इवन दो द चीफ सेक्रेटरी आणि DGP हांच्यांनी कंप्लिटली जे ऑफिसर्स हातूंतल्यान इन्वॉल्व आसा अशा सगळ्या ऑफिसरांचेर डिसिप्लिनरी एक्शन्स आनी एरिंग ऑफिसर्स हांचेर कंप्लिटली थॉरो इन्वेस्टिगेशन जावन तांचेर इन्क्वायरी जावन तांचेर कडक एक्शन कितें ती घेतली. So I have conveyed the urgent and high-level meeting today at the 12:15 and continuously I am discussing with all the concerned officers. So the Chief Secretary, DGP, IGP, Secretary Revenue, Collector North, SP have discussed regarding the cause of the incident, and after having the detailed discussions, I have taken the following decisions. 1. To conduct the magisterial inquiry through the committee comprising of the District Magistrate, SP South, Deputy Collector of the Deputy Director of the Fire and Emergency Services, Director Forensics regarding the procedural lapses and resulted in the mischief, and to submit the report to the government within a week. DGP has directed to take the strict punitive actions against the culprit, including the owner, managers and manager of the club and those who have issued the permissions. The committee shall be the committee shall be constituted under the chairmanship of the Secretary Revenue for conducting the audit of such clubs, business establishment, etc., which are operating without a valid permissions and wherein there is a likelihood to be gathering of the people in large number. An SOP has framed by this committee for all such establishments to ensure such incident shall not repeat it in future. The advisory to issue by SDMA for all club, restaurant and other commercial establishment wherein the likelihood of the significant footfall is there to ensure and they operate and with the valid permissions and adequate safety provisions. The ex gratia amount of the 5 lakhs rupees to the next to the kin of the deceased and the 50,000 rupees for the injured will be the sanction through the SDRF fund.
The government shall provide a complete assistance to the next of the deceased for the transportation of the deceased to their home. Dedicated team comprising of the SDM, police and health authorities have been constituted for the same. I also directed the Chief Secretary and the DGP to take the disciplinary actions against the erring officers. जाल्ल्या घटनेचे हे म्हाका खूब खेद आसा की अशा पद्दतीची टुरिजम सेक्टरांतली ही सगळ्यात व्हडली घटना आसली. म्हाका वैयक्तीक लेवलाचेरूय बी हांव खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या जी घटना जाली ताका लागून पर्सनली स्वता मॉनिटर करून जे कोण कल्प्रिट्स आसा ते भितर वयतले हाजी पर्सनली खात्री करून घेतलो. If you could repeat this in English, what was the incident and when it was informed and what exactly was the cause behind the fire? And was the structure legal? Did it have the requisite permission? one by one. मैं पहले जो बता रहा हूँ ये इंसिडेंट्स यानी 11:45 रात को हुआ, आरपोरा यह जगह पे हुआ है और इंसिडेंट होने के बाद तुरंत विद इन द 45 मिनट्स आवर एंटायर पुलिस टीम, फायर डिपार्टमेंट टीम्स was there. It is very difficult for the fire departments to reach to that exactly to the club because of the various obstructions. But फिर भी यानी within half an hour जो फायर कंट्रोल वहाँ लेना था उन्होंने फायर कंट्रोल लिया और जब अंदर जाके उनको सिर्फ यानी 2 डेड बॉडी ऊपर दिखे, इसीलिए उन्होंने पहले उसको सिर्फ 2 डेड बॉडी बताई, लेकिन बाद में जब वो क्लब के अंडरग्राउंड गए तब उसको बाकी जो 23 डेड बॉडीज़ जो दिखे वो दिखे, लेकिन अंदर वाले जो डेड बॉडीज़ थे उनके लिए कोई यानी फायर इंजरीज नहीं थे. बिकॉज ऑफ द सफोकेशन से इंसिडेंट हुआ. मुझे लगता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो यानी इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंट्स हुआ. इस क्लब को डेमोलिशन नोटिस भी जारी की गई थी. आपके विधायक संकल्प आमोणकर ने इसके खिलाफ अपने असेंबली में आवाज उठाया. जीरो और मेंशन केला संकल्प. क्या ये इको सेंसिटिव जोन में बना हुआ एक क्लब है? इसकी पूरी इंक्वायरी मेरे मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं और उसका विद इन अ वीक रिपोर्ट आ जाएगा. और जो आप अभी जो पूछ रहे हैं इसके बारे में मेरे दोनों टीम अभी इस बारे में आज ही कुछ लोगों को सस्पेंशन इशू हो जाएगा, क्योंकि सीएस और सीएस की पूरी टीम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं. उसके पूरे रिपोर्ट अब तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उसके कुछ दिन के लिए उसके डेमोलिशन निकाली थी, किसने उसका परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद उसने फिर इसका ट्रेड लाइसेंस किसने दिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद यानी वो कंटिन्यू किसने रखा. इसलिए मैंने कहा कि द कंसर्न टू ऑपरेट देने वाला, उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है. उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी. आज के क्लब के पास एट प्रेजेंट मैंने बोला कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की है, मेरी पूरी टीम ब्यूरोक्रेसी की टीम उसकी इंक्वायरी कर रही है. इसलिए यानी विदाउट फायर एनओसी भी समझौती होगी किसी ने, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी.